अजीब सा कम्युनिटी है वैलोरेंट like compared to any other community. Why I would say this, like personally BGMI community is like a diehard fan. You guys act like the BGMI fans, but you are not as passionate as them. Damn, okay. Either be as passionate as them. भाई मतलब बनाओ cult following करो कोई टीम की. This game is a hot garbage. It sells like pancake because मैं year भी है ना उसको ऐसा decade वाले स्पैन में लिखता था something between year ऐसा. तो मतलब काट देते थे मार्क्स मेरे बहुत मैसिव काटते थे. उसमें तक मैंने 94 लाया. मेरी मॉम शॉक थी क्या बेटा क्या किया ये तूने. मेडल esports में गए ना वो. And I had very high expectations from that Indian lineup. Like it was a very good lineup. सब अच्छा था सब कुछ everything. फिर बाद में साई के साथ भी मतलब pretty good चल रहा था. Scrims were good, but then we lost matches. लेडीज जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का वापस एक और नए एपिसोड आर्ट ऑफ गेमिंग के पॉडकास्ट में. और आज वी गॉट अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट इलस्ट्रियस एंड एलीट स्क्वाड ऑफ रेवेनेंट esports, जो अभी कुछ ही दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैन खेलने वाले हैं. वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल एंड आई वुड आल्सो से probably experienced and also loved, while also being slightly young at the same time. Please welcome Mr. Kasif, aka Paradox, a man of many talents. Welcome. Hello guys. Welcome Paradox. How are you doing? I'm doing great. What about you? I'm doing great. ये इंग्लिश कभी ज्यादा सुनी नहीं है तुम्हारी तरफ से, लेकिन अच्छा है. It's nice to hear. Okay, I want you to tell me, Paradox. Of course, you have had a very, I would say कि बहुत ही अलग करियर रहे तुम्हारा from a usual FPS player, right? क्योंकि I think you have played a lot more games professionally than your peers who are around you, your colleagues who are around you, right? तो I want you to start by telling me सबसे पहला जो था गेमिंग का एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या था? Like I've always been a casual gamer. मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ. Like मैं जब से 8 या 9 महीने का था मैं तब से गेम खेलता आ रहा हूँ. मेरे घर पे हमेशा से I had the luxury of having 2 PCs because my dad's a graphic designer. So I never like had such thing regarding my PC. बचपन से खेलता आ रहा हूँ. सबसे पहला गेम मेरा था Dave. उसके बाद था सेकंड गेम था रोड रैश. फिर मोटोक्रॉस स्टॉर्म समथिंग लाइक दैट. बहुत सारे खेलता है. मुझे कभी FPS गेम्स पसंद नहीं थे. Like legit I kind of hated them. I was a huge fan Why? of sports game. नहीं मुझे वो गन शूटिंग वो सब पसंद ही नहीं थी कभी. Ironic, okay, हाँ तो like कभी पसंद नहीं था. I was like huge fan of racing games and sports game. तो जैसे like I remember like जब छोटा था मैं सिर्फ रेसिंग गेम्स खेलता था. I was huge fan of cars. NFS अंडरग्राउंड खेला था. सबसे पहला रेसिंग गेम मतलब नीड फॉर स्पीड का मेरा फर्स्ट था अंडरग्राउंड 1. Then U2, then Most Wanted, then Carbon. फिर अंडरकवर खेला and I was like bro what the fuck ये ने क्या कर दिया है. मतलब Carbon for me was the best in the black box era. उसके बाद में सब चेंज हो गया वो बात ठीक है. And then even in FIFA, like I started my FIFA journey with FIFA 2005. जिसमें आर्सेनल बहुत ज्यादा ब्रोकन थी. Henry, if I'm not wrong, had a rating of 98 or something. Yeah, I remember, yeah. वो मतलब था बहुत अच्छा था. So I was always a fan of these. And कभी टाइम पास में फ्लैश गेम्स हुआ करते थे बचपन में. वो सब खेलता था. But I was never a fan. Like I had tried CS when I was like 2 or 3 years old. वो CS 1.6 का एक अलग वर्जन आता था. तभी तक कंडीशन 0 लॉन्च भी नहीं हुआ था. एक बॉट्स वाला वर्जन आता था. तो मैं खेला. I was like boring game क्या है. And I was a kid. It was not appealing to me. वैसे टाइप का. फिर बाद में like fast forward a few years later, मेरे दोस्त लोग मेरे जो कॉलोनी के दोस्त लोग हैं वहाँ पे नीचे साइबर कैफे हो गया था जो कितना था 10 रुपए में 1 घंटा देता था खेलने का. And PC were absolute shit, but the PCs which were running condition 0 वो अच्छे से चलता था. And अच्छे से I mean like 24 FPS 20 FPS of condition 0. You can imagine. And हम लोग लैंड खेलते थे. वो थोड़ा सा फन लगता था. बट आई वाज लाइक स्टिल नॉट अपीलिंग टू मी. मैं दोस्त लोग को बोलता था चलो यार फीफा खेलते हैं ऐसे कुछ करते हैं. बट उन्हें मतलब CS खेलना था. बोलते अरे यार इसमें मजा है. इसके अंदर सब लोग साथ में खेल सकते हैं इंडिविजुअली लाइक मेनी 10 पीपल. 10 भी नहीं. वो कैफे में तभी 6 लोग थे. मतलब 6 ही PCs थे. तो 6 लोग खेलते थे 3v3 वैसा टाइप का. बट मेरा कभी वो जो लव फॉर FPS था वो कभी था ही नहीं.
That's why like I had a very much leaning towards the racing games and such stuff. I mean, अगर अगर उसके बारे में बात भी करें, so have you did you actually try to pursue it professionally? Because I know Uh, you played different games. so basically I had never knew like esports existed till I was the age of 14, like 15, almost 15 on that. So I recall it back to 2015, January of 2015. So like I was scrolling through Facebook and then I saw a tournament, Nvidia Respawn Cup, and मैं देख रहा था वो टूर्नामेंट की ये है क्या, इसमें लिखा था काउंटर स्ट्राइक का एक इवेंट है। फिर मैंने बोला काउंटर स्ट्राइक इवेंट है 5 वर्सेस 5। भाई देखा तो वहां पे मतलब ऐसे प्राइज मनी था एंड एंट्री फ्री था। आई वाज लाइक, मैं मेरे दोस्तों को कॉल लगाया जो कॉलोनी वाले थे, मैं बोला चलो गाइस ये इसका इवेंट है। At till this point, I had no clues Counter Strike Global Offensive existed. CS Source was the latest for me Yeah. क्योंकि सोर्स तक खेल चुका हूँ मैं। बट CS गो ऐसा एक गेम भी आया है, वो एग्जिस्ट करता है, मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं दोस्त लोग को लेके गया, इट वाज हेल्ड इन पवई गियर अप हीरानंदानी में। तो मैं उधर गया, हम लोग को पता नहीं था इंडियन इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं। वहां पे रिपोर्टिंग टाइम था 10 AM। हम लोग पहुंच गए अच्छे बच्चों की तरह 9:30 को, कुछ अता पता नहीं है, शटर बंद है। 11 बज गए, कोई है नहीं, शटर बंद है। हम लोग को लगा ये स्कैम इवेंट है, लोग मेरे को गाली दे रहे कि क्या कर रहा है भाई। फिर अचानक से दो रेडबुल वाली लड़की आती है, वो जो विंग्स टीम की रहती है ना Yeah, रेडबुल की, yeah. वो हम लोग को पूछ रहे ये इवेंट चालू नहीं हुआ है। हाँ, मैं उनको पूछ रहा हूँ ये इवेंट कैसे चालू नहीं आया है। फिर बाद में फाइनली आते हैं एंड फिर 11 बजे शटर खुलता है। वाह। ऐसा करके एंड हम लोग जब अंदर बैठने गए तो वो लोग स्टीम आईडीज मांगे। स्टीम आईडी मेरे पास थी बट किसी और के पास थी नहीं। उन्होंने बोला डालो, तो वो लोग ने फिर मतलब किया, सेटल किया। फिर जब बैठने गए, मेरे पास के अकाउंट ग्लोबल ऑफेंसिव थी नहीं वो आईडी पे। वो लोग बोलते सीएस गो का इवेंट है, हम बोल रहे सीएस गो कौन सा है। फिर वाह। सब बाकी के 4 लोग कंडीशन 0 प्लेयर्स थे एंड आई वाज द ओनली वन हु हैड प्लेड सोर्स एंड मुझे लगा था कि सोर्स का इवेंट है। वहां पे गए, सीएस गो मैंने खरीदा। वो लोग को तो आईडीज मिल गई थी दूसरी, और जो टूर्नामेंट थी उनकी हम लोग खेले एंड वी गॉट डिस्ट्रॉयड 16-1। Damn. बट वो आई वाज ऑलवेज अ कॉम्पिटिटिव किड फ्रॉम लाइक माय बर्थ। लाइक लिटरली मेरे को ऐसा बचपन से ही ना मेरे पेरेंट्स ने लाइक पुश किया है Yeah. कि एक हमेशा मेरे को एक एज अ प्रोडिजी ट्रीट किया है, एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में, एवरीवेयर। सो दे वांटेड मी टू पुश एंड वो मेरे अंदर ही एक ऐसी एक हैबिट हो गई, एक एक अंदर ही ईगो बिल्ड हो गया यार। मैं Yeah. जो भी हाथ लगाता हूँ दैट्स आई एम गोना बी द बेस्ट। एंड वो 16-1 का स्कोर लाइन देख के मैं बोला यार मैं इतना तो गंदा नहीं खेलता हूँ। मैं मतलब एज इन आई यूज्ड टू प्ले एफपीएस बट आई हेटेड देम। मेरे Yeah. दोस्त लोग कभी कॉल लगाते हैं, अरे कहाँ से वहां चल खेलते हैं, वैसा टाइप वाला था मैं। फिर बस ऐसे ही करते करते मैं वो 16-1 देखा, आई वाज लाइक कि ब्रो हराना है। मैंने एक गेम खरीदा था और तभी मेरी बोर्ड्स थी मार्च में बोर्ड्स थी, 2 महीने बाद बोर्ड्स खत्म हुई। बोर्ड्स के बाद मैंने गेम चालू किया एंड देन आई वाज लाइक कि यार सिल्वर एलिट खुला था, सिल्वर एलिट खुला था फर्स्ट रैंक। एंड देन उसके बाद में सिल्वर 4 हो गया था मैं। आई वाज लाइक ब्रो ये क्या रैंक है, मेरे को लगा था अच्छा रैंक है, कुछ नीचे रहेगा उसके। फिर मेरे दोस्त लोग ने बोले भाई तू लोएस्ट ईयर में। आई वाज लाइक ओ ओके। एक साल में आई बिकम डीएमजी एंड वो डीएमजी मेरे 2 साल तक रहा। और कभी डीएमजी का इलो हेल में अटक गया था लाइक सीएस गो के 2 साल तक मैं डीएमजी था। बट आई वाज लाइक स्टिल ओवर पावरिंग एवरीवन। लाइक मैं लैन पे जाता था 2016 से। आई स्टार्टेड गोइंग टू मेनी लैंड्स एंड मतलब तभी ऐसा फेसिड वगैरह का कुछ क्रेज नहीं था इंडिया में, ना सो स्ट्रॉन्ग लॉन्च हुआ था। Yeah. तो तभी लोग रैंक एमएम के रैंक्स पे जज करते थे एंड वो लोग ने देखा कि भाई ये क्या है, MG1 आया, MG2 आया इधर हमारे साथ खेलने के लिए एंड एवरीवन वाज ग्लोबल। Yeah. बट व्हेनेवर दे फेस्ड अगेंस्ट मी दे वर लाइक कि भाई तो मार रहा है, बहुत मार रहा है। 2017 में अगेन द सेम थिंग, ये मार रहा है। तभी फेसिट आया था एंड 2017 के मिड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो स्ट्रॉन्ग वाज लॉन्च। 2017 मिड नहीं, अर्ली 2017 आई गेस। 20, yeah, early. It was earlier. हाँ, अर्ली 2017 में सो स्ट्रॉन्ग आया था। फिर बाद में लैन इवेंट्स अटेंड करता गया। सो स्ट्रॉन्ग में तो मतलब आई शॉट डायरेक्टली टू द रैंक्स और फिर उसके बाद में 128 टेक वाज लाइक ऑब्वियसली अ हेवन। Yeah. बहुत डिफरेंस था। एंड मेरे घर का भी इतना खास नहीं था। आई यूज्ड टू बंक कॉलेज एंड गो टू अ कैफे। लाइक
मेरा जब जूनियर कॉलेज था देन देयर वाज एक्यूरेसी गेमिंग इरला। वहाँ पे मतलब मेरी आईआईटी की कोचिंग हुआ करती थी। मैं ब्रो वो बंक करके मेरे दोस्तों के साथ डोटा और सीएस खेलने जाता था। और वो डोटा डोटा गेम चालू करके ना हम मेरी पूरी लिटरली बैच जो ग्रुपमेट्स है, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको सबको पता है। सब गाली देते हैं 2 बंदों को, एक मुझे और एक मीर को, कि मेरे वजह से सीएस की आदत लग गई और मीर की वजह से डोटा की आदत लग गई और वो उसके वजह से सबका आईआईटी छोड़ो, पढ़ाई से ही मन उठ गया। नहीं तो एक्चुअली वही हो गया ब्रो। मेरा मेरा आई थिंक मेरा भी बहुत सिमिलर था बिकॉज आई हेटेड मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बाइजूस में डाली थी कोचिंग। मेरे को इतना गंदा लगा वो सुबह 7:30 बजे बुलाते। ओके एंड दे बी लाइक 2.5 hours ऑफ दैट एंड देन 10 बजे को कॉलेज, शाम के 4 बजे तक, फिर से 6 बजे फिर से एक और कोचिंग 2 घंटे। मैं बोला भाई नमस्ते, मेरे को नहीं करना। मैं जाता था पूरा दिन। आई वुड जस्ट सिट एट अ कैफे बट वाओ आई मीन इट्स नाइस दैट इट्स सिमिलर बिगिनिंग्स हाँ। लाइक अ गेमर। आई रियली लाइक दैट। लेकिन मेरे को ये बताओ पैराडॉक्स, हाँ। what exactly was it that got you back to FPS if you said that कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? What attracted you Uh, back to it? so it's kind of tricky. So basically, what kind of got me back into FPS was I never gave 2 cents to FPS. Yeah. अगर कोई मेरे से जीतता था, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, No, कोई no, मेरे से go जीतता on, था, please. कोई मेरे से जीतता था, आई वाज Mm-hmm. लाइक ब्रो ठीक है, तू खेल ले, तू अच्छा खेलता होगा, बट तू कोई और गेम में आ, तू चाहे टेकन पे आ, तू स्ट्रीट फाइटर पे आ, तू फीफा में आ, तू पेस में आ, वो अभी इट्स रीब्रांडेड टू ई फुटबॉल, Yeah. तू चाहे पेस में आ, तू कहीं भी आ, मतलब लिटरली कहीं भी आ, एनएफएस का कौन से, हाँ मोस्ट वांटेड में, एनएफएस मोस्ट वांटेड में लैन होता था, एनएफएस मोस्ट वांटेड आ, ब्लर आ, ब्रो लिटरली एवरी गेम, एवरी सिंगल गेम में बोलता था उधर आओ, उधर तुम लोग को मैं हरा दूंगा इजीली, मतलब ऐसा एक आंख बंद करके हरा दूंगा तुम लोग को, ऐसा बोलता था मैं। I was like I gave no shits, and then like I was a part of abacus coaching class as well, and I reached a grandmaster level over there. Nice. So वहां पे एक मेरी दोस्त थी and she was extremely good at FPS games. Mm-hmm. तो एक दिन उसने मेरे को चैलेंज किया and I was like कि लड़की है, ये इससे कैसे मतलब लड़की है क्या होगा, इसको हरा दूंगा। एंड ब्रो शी डिलीटेड मी, नॉट जस्ट मी, द होल बैच, लाइक शी वाज द बेस्ट। Mm. आई वाज लाइक यार लड़की से हार गया, लड़की से हार गया, वो वाला गॉट मी बैक इनटू एफपीएस। Mm. लाइक आई वांटेड टू बीट हर, आई वांटेड टू प्रूव कि यस मेरे में है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। Yeah. लाइक हम लोग में कैसा है कि हम दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होता था। Yeah. इवन इन अबाकस क्लास लाइक हम दोनों हमेशा फर्स्ट सेकंड होते थे एंड बाकी की पूरी बैच पीछे रहती थी, Mm. फर्स्ट सेकंड होते थे। तो वो एफपीएस गेम्स का जब आया कॉम्बैट, एंड मतलब शी वाज काइंड ऑफ मी ओनली, वो सब गेम्स खेलती थी, मतलब सब में अच्छी डिसेंट थी वो, बट वो एफपीएस में बहुत ज्यादा अच्छी थी। एंड तभी मेरा ईगो हर्ट हो गया कि नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता है, आई नीड टू गेट गुड। तो तब से मैंने चालू किया एंड देन आई टुक हेल्प ऑफ माय स्कूलमेट्स कि भाई चलो सीएस खेलते हैं। मैं उनको एनकरेज करने लगा एक टाइम पे कि भाई चल सीएस खेलते हैं, सैटरडे संडे सीएस खेलते हैं। एंड देयर वर पब सर्वर्स जो 16v16 होता था सीएस 1.6 Yeah, में, I remember. 32 पीपल ब्रो, इतना chaos होता था वो सर्वर। इट वर ट्रस्ट मी दे वर बेटर देन डेथ मैचेस, इट वाज वेरी फन। लोग एक दूसरे को इतना गालियां देते थे, मजा आता था भाई। फिर ऑटोमिक सर्वर्स 5v5 के लिए मैं बहुत खेला हूँ ब्रो, एंड बेसिकली दैट गर्ल वाज द स्पार्क टू गेट मी बैक इनटू एफपीएस। Damn. So, is that girl still in your life कि ना ढूंढने की कोशिश नहीं की? शी इज नॉट एनीमोर वैसा। Ah, okay. Sorry, okay. So you tell me about one particular moment in your life जहाँ पे तुम्हें पता लग गया था कि you know what, I can do this for a living. What was that one singular moment of your life? आई कैन डू दिस फॉर अ लिविंग वाला तो मुझे 2022 में आया था, Oh, व्हेन pretty late. Okay. क्या बोलते हैं उसे, जब मेरा क्या बोलते टुवर्ड्स द एंड स्टेंट ऑफ टीआर,
like I would say February or March of TR, Mm-hmm. like the TR run. And हाँ मुझे तभी आया था. So basically I was like, I knew that I am someone exceptional, and especially the agent switching I was doing at that time. I was like, bro, इंडिया में कमी सबसे इम्पोर्टेंट कमी क्या है? दो चीजों की है. एक है आईजीएल की कमी जो स्मार्ट एक लीडर हो, Yeah. और दूसरा था एक ऐसा प्लेयर की कमी जो whatever you throw at him, whatever you throw at him, he is able to counter it, adapt it, and play it better Yeah. than intended. Than intended, वो जो word है, is very crucial over here. I think that you have coming to that topic itself, you have a very unique ability of, I think, adapting to multiple roles at a time in Valorant, and I think that stems from the fact कि you were एक ऐसे player जो हर एक game में you've tried, right? So Valorant के बारे में वापस आते हैं. Tell me about your stints in other games. You tried. I'm pretty sure you tried FIFA professionally, and I remember you telling me that you also played Street Fighter to represent India as well, right? Tell me about Yeah. that. What was that like? So basically, like I never tried those games professionally, but whenever I got the opportunity to play in some events, like any esports events, I never give up. So like still, if there's no Valor events around here, I register myself in CS events. Like CS, so मैं kind of active हूँ currently, but अभी मेरा Valorant का चल रहा है in VCSA, so I obviously have to keep CS at a pause right now. And being the other games, like as you said, FIFA, Street Fighter, I dislike 3D fighters, so no Tekken for me. So like I am more into the 2D fighter kind of scene. Street Fighter ra, KOF ra. So I tried those games. Like even when I represented India, I was like, bro, one random Sunday, तभी क्या था? 2021 था, lockdown था, मैं TR में था. I was like, bro, events तो हो रहे नहीं है, and मैं Street Fighter 5 खेलता था. मतलब एज इन रिसेंटली बहुत कम कर दिया मैंने सब कुछ, तो आई वाज लाइक थोड़ा सा डस्टी हो, लेट्स प्ले, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड ऐसे गिव इट अ ट्राई बोल बोल के मैं फाइनल्स तक आ गया. Damn. आई वाज लाइक, मतलब मैं खेला, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठ के चला गया. आई प्लेड फॉर लाइक मे बी 3 weeks. I prepared for 3 to 4 weeks, and I got back in. I went to finals. I lost in the finals, but the slot was given to me because the guy का जो visa issues हो गया उसका, and I was able to get a visa. So I was a substitute player going over there, but I became the main because of visa issues. Man, what was it like when you went there? वहाँ पे कैसा था? I mean, you went like चलो try मारते and you reached. हाँ, try मारते and I reached. So I was like pretty much surprised कि surprised at the sense I was kind of disappointed too कि मतलब it should have not be possible. Like अभी मैं ट्रस्ट मी, पाकिस्तान का टेकन सीन देखो ब्रो, वहां के टेकन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. दे हैव डिथ्रोन्ड कोरिया. कोरिया वाज द बेस्ट टेकन कंट्री, followed by USA. Pakistan out of nowhere, like not literally out of nowhere, like there was only one guy who was famous. Then now you see there are 5 to 6 names who are on his level and who are also beating him. Yeah. So you can see कि कैसे क्या लेवल का ग्रो हुआ है bro. I really admire Pakistan's Tekken scene bro. Like वो लोग अभी currently they are the best country in the world, and even Korea उनका चलता रहता है. Like there are country battles, you know. Yeah. So Pakistan versus Korea, again Pakistan won. Nee from DRX, he's going to Pakistan just for a show match, a gauntlet match. Like समझ रहे हो, it is kind of the apex of Tekken right now. Yeah. So we should also take something bro. Abhi I was kind of disappointed that me being an FPS player, like it's not that I'm discrediting myself ki I'm not a good player, I'm not discrediting other players that why are you not so good, but at least like if you guys want to try, give it a pro, or like even if you are a casual who's good enough, वो लोग नहीं खेलते. मैंने ये ऐसा नोटिस भी किया है कि कुछ कुछ कैजुअल्स है which are literally better than pro players. Yeah. मतलब वो वैलोरेंट में भी बोल सकता हूँ, सीएस में भी बोल सकता हूँ, बिकॉज देयर आर माय फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली वेरी गुड बट दे डोंट प्ले. मतलब बट उनका रहता है लाइक पर्सनल कमिटमेंट्स के वजह से दे कैन नॉट प्ले एंड दे डोंट प्ले एट वेल. सो लाइक मैं डिसअपॉइंटेड ये था कि व्हाई एम आई रिप्रेजेंटिंग व्हाइल आई एम नॉट इवन अ मेन प्लेयर ऑफ दिस जॉनर. Yeah. सो वो एक काइंड ऑफ अपसेटिंग था मेरे लिए. I think कि there is a certain knack to being a
gift. I think gifted would be a word that I think would describe you perfectly, because you have वो skill है जो you are able to apply to any game, right? So हाँ. मेरे को ये बताओ कि like you just mentioned, you have friends who are gamers, who are casuals, who aren't playing because they have other commitments and they're not, but you said that they're really good. तो उस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, तो do you think there are undiscovered gems who could probably be better than all of you guys? Like Pakistan, for example, one guy exploded the scene, right? Hmm. Now, do you think India needs one guy like that, let's say, or one team like that in Valorant to explode, where everybody will start looking at Valorant like, okay, you know what? This is where we need to invest our. Yes, obviously. Like, honestly speaking, if a team bursts out of from India, like especially if it's a 5-man Indian roster, which is kind of a big shot if you just think of it, but it gives a lot, bro, a lot of boost. Like I have seen, bro, Arsalan Ash from Tekken, he was the lone guy. मेरे को भी पता था, तो he was only the lone guy from Pakistan. Yeah. Then fast forward 1.5 year, not 1.5. Let's take two, bro, 2.5 years. I can see Atif, some players from Fate, but so many, bro. Like I cannot even remember. There are 5 to 6 players who are playing on the top level. And if you see in a logical sense, वो टॉप प्लेयर ऐसे ओवरनाइट नहीं बने. वो लोग ने किसी को एज एन इंस्पिरेशन लिया रहेगा. दे ग्राइंडेड देयर आस ऑफ एंड Yeah. राइट नाउ दे आर एट द लेवल व्हिच दे डिजर्व. And that's actually an inspiring story. Then what is holding back Indians? True. Let's just keep Rossi as example, bro. He has played on a Pacific level. Golu, right now he's playing in G on on Pacific level, international level. Then why you cannot be him? True. They are also Indians. They are also Indian blood. कुछ लोग बोलते हैं भाई जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है बाहर वालों का. अरे क्या फर्क पड़ता है भाई. चलो मैं तो ये भी मान लूं कि रशियंस आर बिल्ड डिफरेंट. भाई वो लोग आदमी अलग है. बट तुम लोग में क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है? I mean, इंडियंस आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट. अगर ऐसे रेसेस पे जाओगे तो इंडियंस आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट. true, that is true. लेकिन एक चीज है कि अगर if you look at the uh, eh, the point of the matter that बाकी सारी कंट्रीज में, right, या फिर चलो EU and NA particularly, USA and of course entirety of EU, over there the esports programs are of course a lot more dense, because वहाँ पे sometimes the governments are involved. वहाँ पे लोग they actively try to incorporate the younger people a lot more. लेकिन यहाँ पे ये हमने डिस्कशन पहले भी किया था in one of my videos कि here the players who have been playing for the last 10 years are still playing currently right now. Kya is do you think it's a risk that they see investing into younger players, or do you think it's something else कि यार यंगर प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना फायदा नहीं है क्योंकि वो सुनते नहीं है ऐसे कुछ, या फिर उनको डर लगता है, या फिर ये सिर्फ ये काइंड ऑफ फेवरेटिज्म या फ्रेंडशिप है जो वो बस उसको बढ़ाते जा रहे हैं कि सेम प्लेयर्स को फिर से खेले जाओ? No, not really. Like it's a two-way answer actually. First, I would go with like कि वो बच्चे लोग या बुड्ढे लोग को हरा नहीं पा रहे. That's the most logical answer. And even any org who is investing a load of money, they would rather go for a winning team than to develop. And if there's one org, like maybe they're trying to develop some talents on a low budget, they want to sustain for a long run, which is quite not possible in Indian scene, because like pre-franchising, there were so many events lined up. Like कितने बार तो ऐसा हुआ है कि दो तीन इवेंट एक ही साथ चल रहे हैं. मतलब दोपहर को कोई दूसरा इवेंट चल रहा है, शाम को कोई दूसरा इवेंट चल रहा है, रात को किसी इवेंट का फाइनल चल रहा है, वैसा चल रहा है. सो like orgs wanted a quicker solution. Like चलो अभी चुटकी बजाया, एक विनिंग लाइनअप हमारे पास में. तो टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग रन लाइनअप कि चलो एक बच्चे लोग की लाइनअप उठाते, मे बी विद सम लाइक अ गुड मिक्सचर विद सम एक्सपीरियंस पीपल, अ गुड कोच और एनीथिंग. And first of all, the thing is like support staff in India is very much मतलब neglected. Almost non-existent if you ask हाँ, me. सपोर्ट स्टाफ को तो कोई भाव भी नहीं देता, वैसा टाइप का है. सो दे आर वेरी नेसेसरी. सो वो प्री फ्रेंचाइजिंग के एरा में तो लाइक दे ऑब्वियसली वांटेड विनिंग लाइनअप्स, बट राइट नाउ where they can like make some talents or anything, still the problem exists. Like franchising has
honestly, I'm not a fan of franchising. It has killed the ambitions. Like, what do you mean? Out of the whole Asia Pacific region, Mm. first you have to qualify from open qualifiers. Yeah. Let's take an example: 200 teams registered. Mm-hmm. There are 1,000 players. Yeah. 1,000 players में से only 5 players move forward. Mm. 5 players में से they'll compete in an 8 team league. Mm. Then again you 40 players. 40 प्लेयर्स में से और वापस 5 आगे जाएंगे Mm. असेंशन, वापस 8 टीम्स, वापस 40 में से 5 जाएंगे. तो इफ यू जस्ट ट्रेस बैक, देयर वर 8 रीजन्स एंड सबके 8 टीम्स थे और सबके ओपन क्वालिफायर्स थे. ब्रो, लिटरली लैक्स में जाते हैं कुछ कुछ नंबर्स. Yeah. लैक ऑफ पीपल, लाइक जितने एस्पायरिंग प्रोस थे उनमें से 5 है. Yeah. वो रिस्क कौन उठाएगा कि चलो ये बच्चों लोग को लेते हैं, 1 साल काम नहीं किया, दूसरे साल काम नहीं किया, तीसरे साल तक काम करेंगे, बट उनके रिटर्न्स किधर है? Yeah. An org needs to sustain, and the kids don't have brand value as much as the older people do. True. Yeah, that's one more thing I was thinking. That is there. And I think yeah, it बहुत मुश्किल of course होती है कोई भी और go, क्योंकि if they're not able to make a return, if they're not having any form of revenue, of course मुश्किल जरूर होती है. And I think that वो brand value जो है that you're talking about, I think it's become a very important topic, you know, for esports players in general. क्योंकि कोई और स्पोर्ट हो जाए तो आई थिंक ऑटोमेटिकली इफ यू प्ले वेल you basically get there, right? And वो जो भी young player हो, older player हो, like for example Indian cricket team भी रख लो, yeah, very popular, what not. लेकिन अगर आपने 1 या 2 या 3 या 4 मैच इंडिया के लिए खेल लिया और आपने चलो एक मैच में लेकिन मार ले, so you become somebody like Shubman Gill, or you become somebody even like, you know, someone like the Ruturaj Gaikwad, कोई भी है, brand value instantly increase हो चुका है. And they're some of the younger players who are supposed to be the future of India. Now वैसे ही अगर हमारे इसमें प्लेयर्स को यहाँ पे ब्रांड वैल्यू पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू डू यूट्यूब, डू इंस्टाग्राम, डू यूट्यूब शॉर्ट, सब कुछ स्ट्रीम करो, कंटेंट बनाओ, सब कुछ, एवरीथिंग, ट्विटर, व्हाट नॉट. सो डू यू थिंक that falls under now as a responsibility, or do you think that is something that the player, you know, को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? It, like, अगर if you talk about an ideal scenario, players को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, but it falls under responsibility, to be honest. Like, प्लेयर्स तो अच्छे होते ही है, बट एट द सेम टाइम अगर तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम्हें टूर्नामेंट के मैचेस देख रहे हैं, लोग बोलेंगे भाई क्या मारा, क्या खेला, ये ना वो. A player might be consistent for the whole event. Yeah. Maybe the whole challenger scene पूरा consistent हो. But at the end, when the match stops, the match stream ends, सब बोलेंगे कि भाई इसने क्या खेला, उसने क्या खेला, but people don't know who is he, who is he outside the game, who is he, where does he stream, where does he go live, where can he show himself. No one knows. To and then, like, अगर उसने वो एक इम्प्रेशन नहीं छोड़ा है अपने व्यूअर्स पे, Yeah. कि मतलब, तो तब तक वो इम्प्रिंट नहीं होता उनके दिमाग में. Needs Like to he instantly will be, capitalize. yeah, he will be just another forgotten name. Like, wow, the basically in football terms, he will be a player that the streets won't ever forget. True. The Yeah. streets will never forget him, but the people will. That is, yeah, I think कि ऐसा एक opportunity, of course, like, you know, if you consider players like let's say Deadly, right? उसने काफी, he came out pretty strong from Reckoning, फिर उसने प्रोफाइल बढ़ाई जरूर. अभी वो slowly सब लोग I think are focusing on, you know, streaming their ranked games every time they are playing rank. You know, it's just एक बटन जो दबाना है, like you just have to press start streaming और कुछ नहीं. बाकी तो your personality is there, of course, you bring in the audience that you do, and there are people who will watch you. लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं, we'll get to the people later, but I wanted to ask you particularly कि अपने पूरे करियर में so far, you know, CS to this to now, whatever it is, has there ever been any moment where you felt like you should probably give up on esports? Give up? Yeah. Like, in my CS run, in fact, till my 2021 run, I was like not really sure about esports. Not like, I was playing for the fun of it. Why? Because like मेरे घर वालों ने, मतलब, I was good, I was earning money and everything, and at the same time I was like,
प्रैक्टिस भी करता था मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने कभी वो नहीं सोचा था कि आई विल गो ई-स्पोर्ट्स फुल टाइम। व्हाई? बिकॉज़ लाइक मेरे घर से उन्होंने एक ही दिया था। मुझे एक ही कंडीशन थी कि बेटा तेरे को जो करना है कर, मेरे को हम लोग को पता है तू अच्छा ही करेगा, हुँ, कि तू बस पढ़ाई मत छोड़ना। हुँ, सो मैंने इसलिए उनके बोलने पे बीएसआईटी कंप्लीट कर ली, एमसीए कर लिया, अभी एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। वाह! एंड एट द सेम टाइम लाइक उनको भी पता है कि मतलब कि ई-स्पोर्ट्स इज़ अ वोलेटाइल इंडस्ट्री। हुँ, भाई आज है, कल नहीं है, गेम बैन हो गया, क्या करोगे? मतलब हुँ, देयर आर मेनी मतलब मल्टीपल केसेस। तो टीम से निकल गया, कोई टीम ले रही नहीं है, तो क्या करेगा? या, तो बहुत कुछ है, बट लाइक ऐसा मतलब मैंने कभी सोचा तो नहीं, हुँ, लाइक क्विटिंग ऑन ई-स्पोर्ट्स। मतलब at early stages when like people do think कि you should quit, but in the early stages I was not thinking of a esports. फेयर मतलब है, I जैसे was कि just going with the flow कि चलो अगर टीम ने उठा लिया क्या पता भाई पैसा मिल जाए. My first organization like literally in such a long run like CS में तो मुझे मिला नहीं due to some unfortunate reasons, but in Valorant my first org like literally first ever org is True Rebels, and I'm या, very much like thankful to them, thankful to Yash, the owner of TR, Kiran, the co-owner, and Doc Awesome, Sagar Chauhan. हुँ, So basically, he was manager at that time in TR, या, and he scouted our team, the Rat हुँ, Syndicate. तो हुँ, उन्होंने हमें अप्रोच किया बोल के कि गाइस तुम लोग टीआर के लिए खेलोगे, दिस इज दिस ऑर्ग, एंड टीआर वाज वेरी लाइक कंपेयर्ड, बहुत न्यू ऑर्ग थी उनकी, खाली कॉडम में लाइनअप थी तभी वो टाइम पे, एंड आई वाज लाइक ब्रो चले जाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा था, सब अच्छा था, एंड वी वर लाइक इट्स ओके. We started on a minimal salary, which is obviously expected because none of us are a big names. Everyone या, is young, new to the scene and everything. And like, okay, let's pick it up. And then we shined through TR. अभी भी टीआर में से अगर if you remember the names like me, one tap god who's still active, Master who's still active in CS right now, but he's switching like thinking to switch back to Valor. हुँ, Relic and Crosshair have pursued like their personal life career. हुँ, Relic is doing a job, Crosshair is also doing his job, and Bones is currently studying like abroad, like what not abroad, like pursuing further studies, higher studies. yeah. That I mean, that team also was very like I think you guys were the first brand of young team that was being Yeah. put into the scene, and लोग भी top 6 तक तो आ ही जाते थे almost every tournament. No, Top bro, 4, top four आ जाते थे top हर time. yeah, no, Like I'm saying top हाँ 6 तो you guys were always there. Top 4 हाँ was there, and then came the VLT and Global Esports. हाँ, हमेशा वीएलटी जी फर्स्ट सेकंड रहती थी, एंड Mm, हम लोग थर्ड आते थे. एंड देन व्हेन एनिग्मा गेमिंग केम आफ्टर 3 months ऑफ एनिग्मा गेमिंग्स इंसेप्शन, हम लोग फोर्थ आने लगे, एनिग्मा थर्ड आने लग गई. yeah. फिर उसके बाद में उसके हम लोग बीच का टॉप में फोर कंफर्म रहता था, एंड रेकनिंग भी बीच में थी. फिर नहीं, रेकनिंग रेकनिंग और हम लोग में फोर्थ फिफ्थ होता था, Yeah, एंड एक्सो भी आ गई फिर उसके बाद में. yeah. काफी सारे टीम्स है, but there was something you mentioned that I want to catch up upon, that is your parents, right? You said कि उन्होंने बोला था कि जो करना है तुम करो. Has it always been like that, or have your parents ever like कभी टाला है कि अरे यार esports gaming ये सब क्या है करके? देखो, सो लाइक आई नीड टू ट्रैक बैक. सो इन 10th मतलब कैसा था, काइंड ऑफ लाइक मेरा, आई वाज एकेडमिकली वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे स्कूल वाले भी थे, बहुत फोर्स करते थे, बट 8th 9th 10th मेरा बहुत ज़्यादा रफ पैच था, एंड आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज फॉर सम व्हाट रीजन. हम्म, एंड मतलब तो 10th में भी मतलब मेरे टीचर्स ने बोला था कि अब मतलब मेरे मॉम डैड को बोलते थे कि अपने बच्चे को बोला थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने एंड एवरीथिंग. एंड देन 10th में I somehow boards में I just locked in again. I was like I was gonna give it all, but I still scored 87.2, which हम्म. is not bad at all, अरे but very good dude very considering. good. But the thing is, like I expected 95 or above. My हम्म, school expected 94 and above, and even my parents were like 87. मतलब it's not bad. That they said it's good, but seeing my confidence, they were shocked कि अगर बच्चा 95 बोल रहा है तो 87 कैसा है, kind of thing. yeah, And I wanted to recheck my science paper because I was very strong in science at that time, and I हम्म, scored 78, and I was like, bro, something is wrong. I हम्म. scored 99 in mathematics. I scored like social studies, bro. History, geography तो मेरा इतना गंदा था, मैं just pass होता था. I'm not even kidding. I was not able to remember the dates. Yeah. कभी क्या बॉस्टन टी पार्टी हो गया भाई, मेरे को क्या पता कभी हुआ. ऐसा था. मैं आंसर्स भी ऐसा इतने वेग लिखता था ना, like the ship landed near this dock, it was over here, some बड़ा guys चढ़ा came के, there. yeah, yeah. हाँ,
और मैं डेट्स नहीं लिखता था, कितना भी घुमाता था डेट्स नहीं लिखता था। आई वाज लाइक वेरी रफ। मैं ईयर भी है ना उसको ऐसा डिकेड वाले स्पैन में लिखता था, समथिंग बिटवीन ईयर ऐसा। तो मतलब काट देते थे मार्क्स मेरे, बहुत मैसिव काटते थे। उसमें तक मैंने 94 लाया। मेरी मॉम शॉक थी, क्या बेटा क्या किया ये तूने हिस्ट्री ज्योग्राफी में। बट साइंस वाज अ शॉकर फॉर मी बिकॉज़ साइंस आई एक्सपेक्टेड लिटरली 100, नॉट इवन किडिंग, 100 आउट ऑफ 100 एंड आई स्कोर्ड 78। आई वाज लाइक मे बी दे मिस्ड आउट सम पेपर्स टू चेक, क्योंकि होता है, कई बार Yeah, होता है ये। yeah. बट आई वाज लाइक ब्रो फक इट, रीचेक, जाने दो, जितना आया आया, अच्छा ही आया Mm. एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। 11th 12th डिजास्टर, मैसिव डिजास्टर। वो इंट्रोडक्शन ऑफ डोटा इन माय लाइफ वाज अ डिजास्टर, नॉट जस्ट मी, द होल बैच, पूरी बैच खराब हो गई। अबे ब्रो लाइक fuck, I to remember, just to remember it, we were the elite batch, okay, Mm. according to the merit. We were supposed to crack IIT। चलो एक नहीं, मतलब 5 नहीं, 15 में से 5 नहीं, एक तो कर लो। पूरी बैच कौन भाई। हम लोग का टॉप स्कोर जेईई मेंस में 55 था आउट ऑफ 360। Wow. Elite batch. तो ब्रो डिजास्टर था। Mm. आई स्कोर्ड 17 इन जेईई मेंस। मुझे अभी भी याद है, आई क्लियरली रिमेम्बर, मैं Mm. जेईई मेंस के सेंटर में गया हूँ, मैं पेपर देखा, आई वाज एबल टू सॉल्व इट, बट पता नहीं वो अंदर से एक ऐसा अलग ही वो था, वाइब था कि ब्रो फक इट ब्रो, व्हाट एम आई डूइंग दिस। ये नहीं, मुझे आईआईटी नहीं जानी है, जिंदगी खराब नहीं करनी है मेरे को, वैसा। आई वाज लाइक ब्रो लाइफ इज सो फन। Yeah. आई थ्रू द पेपर। Wow. आई You थ्रू द पेपर। threw it, yeah. फिर उसके बाद में Throwing तो paradox के खून में रग रग है. लेजेंड ऐसा थ्रो कर दिया मेरा पेपर एंड आई वाज लाइक, फिर बाद में मेरे को एक ऐसा होता है ना, एक रियलिटी चेक। Mm. मैं बोला कि यार जेई तो थ्रो कर दिया है, बट अभी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सीईटी आ रहा है। अगर Mm. सीईटी भी नहीं दे पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को Yeah. आईआईटी में नहीं घुसना है, ऐसा नहीं है, मेरे को करियर थोड़ी खराब करना है। Mm. देन बोर्ड्स हो गया, फिर सीईटी के लिए मैंने अच्छा प्रिपेयर किया। Yeah. सो सीईटी में हमारे टाइम पे देवर मार्क सिस्टम, तो परसेंटाइल नहीं था, अभी परसेंटाइल आया। तो हमारे टाइम पे सीईटी में आई स्कोर्ड 91 Mm. एंड आई लैंडेड आईटी इन ठाकुर कॉलेज। Nice. आईटी इंजीनियरिंग मिला था ठाकुर कॉलेज में। एंड बोर्ड्स अगेन अ डिजास्टर। हम लोग को 60% के ऊपर चाहिए रहता है टू एनरोल इन इंजीनियरिंग एंड आई स्कोर्ड 60.62। Wow. एंड जो पीसीएम का एग्रीगेट होता है दैट शुड बी 50% और अबव एंड इट वाज 51 फॉर मी। द क्लोज कॉल। मेरे को मिल गया आईटी इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, Mm. बट इट वाज फन, दैट कॉलेज वाज फन। आई मेट रियली गुड पीपल, कुछ फैकल्टीज अच्छी थी, बट अनलकीली our faculty, our head faculty, or the homeroom teacher was really shit. Mm. And I'm like not even kidding. She trust me, I never say it to anyone, कोई but बात she नहीं. shouldn't teach anymore. Damn, okay. Like bro, she had something like some other problem, I don't know, और स्टूडेंट्स पे भाई अलग ही खुन्नस निकाल देती। So like I used to bunk, obviously I used to go to gaming cafes and everything, and Mm. 75% attendance is like compulsory, and I had somewhere around 67, which is kind of doable। भाई घर पे लेटर भेज दिया उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही, बोल के कि 50 के नीचे अटेंडेंस। में बोला अरे कैसे, मैं फोटो लिया डिफॉल्टर लिस्ट का, घर पे दिखाया, मैं बोला 67 है। तो मेरी मॉम आई एक बार कॉलेज में मिली, Mm. bro the teacher says I have never seen his face in my life, 10% के नीचे अटेंडेंस रहेगा। मैं बोला क्या बोल रहे हो आप मैम, ऐसा 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, थर्ड महीना में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। आई वाज लाइक ब्रो, मैम को चिल्लाया मैं उल्टा। मैं बोला मैम आप क्या बोल रहे हो, आप हो ना होश में, नशा करके बैठे हो क्या। तो मेरी मॉम मेरे को चिल्लाने लग गई कि बेटा ऐसा कौन बात करता अपने टीचर से। Oh my मैं चिढ़ God. गया, मैं बोला कि ये कुछ भी बोल रही है, क्या चल रहा है, गलत बोल रहे हैं। एंड मैम जस्ट टू गैसलाइट और समथिंग, एक कोई तो रैंडम सर थे स्टाफ रूम में Mm. जो हमारे क्लास को पढ़ाता ही नहीं है। Mm. वो बोलते हैं, वो सर को पूछ रहे सर आपने आपने इसको कभी अपने क्लास में देखा है क्या। मैं बोला मैम वो हम लोग को पढ़ाता ही नहीं है, किसको पूछ रहे हो। वो बोल रहा है, वो सर भी बोल रहा है नहीं देखा मैंने इसको। मैं बोला सर आप कौन सा क्लास पढ़ाते हो। सर ने बोला आईटीबी। नहीं आईटी है। मैं बोला मैं आईटीबी का हूँ, आप पढ़ाते ही नहीं हो मेरे को, कैसे दिखूंगा मैं आपकी क्लास में।
भाई मतलब बहुत बहुत ऐसा हुआ, ओह बहुत वाह! ऑलमोस्ट झगड़ा टाइप का हो गया था, हीटेड आर्गुमेंट। फिर आई वाज लाइक ब्रो, आई डिसाइडेड दैट इफ आई स्टे 4 more years इन दिस कॉलेज, आई एम फक्ड। या तो मैं जिंदा रहूंगा, या तो ये टीचर जिंदा रहेगी। इट्स बेटर टू जस्ट गो आउट। फिर उसके बाद मैंने उधर भी थ्रो कर दिया। 12 सब्जेक्ट्स होते एक ईयर में। हुँ, मैंने मैंने जानबूझ के 10 सब्जेक्ट, मतलब 6 पर सेम होते हैं, मैंने 5 में केटी लाया। और केटी कैसे लाया, मैंने एक आंसर, जो सबसे बड़ा आंसर होता है ना 15 मार्क्स का, वो इतने प्यारे वजह से लिखता हूँ। मेरे को 14 या 15 आया मार्क्स, सब पेपर में आया 14 या 15, और बाकी पूरा पेपर ब्लैंक है। और मैं दूसरों को है ना आंसर बताता, मेरे आजू बाजू मेरे दोस्त लोग बैठते थे, मैं उनको आंसर बताता था, और मैं उड़ जाता था। हाफ एन आवर के बाद यू आर अलाउड टू गो। या हाफ एन आवर में हो जाता था, वो इन्विजिलेटर से बातचीत करता था मैं, सर आप चाय पिएगा, मस्ती चाय करिएगा। पिएगा। तो एक इन्विजिलेटर ने देखा 2 दिन तक कि ये उड़ जाता है, और ये आंसर तो बराबर लिख देता है, ये उड़ता क्यों है। तो हुँ, पूछा बैठ के, उसने मेरे को ऐसा मतलब कन्विंस किया कि बेटा जो तू कर रहा है, वो तू समझ रहा है, तू गर्म दिमाग से कर रहा है, मत कर ऐसा। मैं बोला अरे भाई जाने दो मेरे को, ये रहा वो। किया सब, मतलब क्लास क्लाउन था। मैं, उनको पता था कोई भी इन्विजिलेटर मेरे क्लास में आ रहा था, हंसी मजाक होने वाली है फॉर आधा घंटा, फिर उसके बाद में स्ट्रिक्ट हो जाते थे। मैं आंसर बताता था, हंसी मजाक करते थे, पूरे जोक्स क्रैक करते थे, फिर चले जाता था। सेम हैपेंड इन सेम टू। हुँ, 5 में केटी लेके आया, और एक पेपर में बहुत अच्छे से लिखा, जिसमें मेरे को ए+ मिला था। ऐसा करके मैंने 10 केटी लिया। आई वाज लाइक ब्रो, आई एम ड्रॉपिंग आउट ऑफ दिस कॉलेज, आई डोंट वांट। डैम! फिर मेरे घर वालों से मतलब बहुत सुना मैंने, हुँ, एंड देन दे सेड बेटा देख, तू जो भी कर रहा है, तू गेम खेल रहा है, हम लोग को क्या पता क्या है, उनको आइडिया ही नहीं है गेमिंग का। कर रहा है जो कर रहा है कर, बट तू स्मार्ट है, तू ये है, तू अपना करियर खराब क्यों करना चाह रहा हुँ, है। जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट मेक श्योर दैट यू डोंट ruin योर फ्यूचर, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, एंड आल्सो कीप फोकस ऑन स्टडीज। क्योंकि आगे जाके मतलब अगर कुछ ना हो तो एटलीस्ट तेरी डिग्री काम आएगी। या, तो वैसे फिर बाद में मैंने बीएससी आईटी ले लिया, बेसिकली चिलर वर्जन ऑफ आईटी इंजीनियरिंग किया। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अटेंडेंस बोझ थे, क्योंकि मैं वापस कैफे जाता था, बट एट द सेम टाइम लाइक रियलिटी चेक मिलने के बाद आई काइंड ऑफ लाइक आ गया वापस बैक ऑन ट्रैक, एंड देन आई पास्ड बीएससी आईटी विद 8.7 पॉइंटर। हुँ। Again, not bad. 8.7, 87%. काइंड ऑफ लाइक डिसेंट ओनली अगेन, मतलब व्हाइल प्लेइंग गेम्स, जिसमें से अभी टेक्निकली अभी ये कॉलेज में एक्चुअल में मेरी अटेंडेंस 20% थी। वाह! बट मेरे टीचर सपोर्टिव थे। हुँ, यार लाइक तू क्या कर रहा है तू? घर पे बोलता है। मैं बोला घर पे बोला है, बट देखो आप टेस्ट लेते हो, टेस्ट में फेल हो रहे हो, नहीं अच्छा आ रहा है। 20 रहता है ना यूनिट टेस्ट, तो या 20 में से मेरे को 18 के नीचे कभी आया नहीं। तो वो लोग बोलते मतलब तू पढ़ रहा है, ठीक है, जा तू एन्जॉय कर, तेरा अटेंडेंस का हम लोग देख लेंगे। वाह! I mean that's actually very I would say कि I wouldn't even say lucky. I think वो स्किल लेवल ही तुम्हारा ऐसा है कि तुम मैनेज कर पाते हो। लेकिन ये अगेन डूड इट्स सो सिमिलर बिकॉज़ आई आल्सो मैंने भी ड्रॉप आउट किया था। आई डिड इंजीनियरिंग मैं भी जाता था, मैं भी कैफे जब बैंक पर अरे यार मेरे परसेंटेज आई हैड 18% अटेंडेंस पहले सेमेस्टर में जानबूझ के क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग इत्तेफाक पसंद नहीं था एंड आई पर्पसली मेड श्योर कि मैंने सारे सब्जेक्ट फेल करके सिर्फ इंग्लिश में मैंने 97 निकाला पेपर में क्योंकि मेरे को सिर्फ इंग्लिश पसंद था उस वक्त और वो टीचर अच्छी थी बाकी के टीचर मैं बताता हूँ एक आई थिंक यू लाइक नो आई डोंट नो हाउ ऑफन दिस हैपेंस लेकिन जो अटेंडेंस की तूने बात की ना हाँ, when I was at the edge of basically same thing like अरे यार इसकी करियर खराब हो जाएगी वो सब पेरेंट्स आ गए थे कॉलेज में वो एचओडी बुला के बोलते मेरे पेरेंट्स को सर आप टेंशन मत लो हम देख लेंगे इसका ये स्पेशल आई नो ही इज अ स्पेशल केस मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सामने बोल रहा हूँ मुंह पे बोल रहा हूँ वो बोल रहे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अभी तक पसंद है कि नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हें पसंद है मैं ये क्या साइड में मेरे पापा पूरे गुस्से में बैठे हैं मेरी माँ और ऑलमोस्ट रोने के स्टेज पे आ गई है वो बोल रहे आप टेंशन मत लीजिए इसकी अटेंडेंस मैं देख लूंगा आप इसको बस बोलिए कि एग्जाम लिखिए ठीक है मेरा 18% था अटेंडेंस ओके सारे बाकी स्टूडेंट्स का मिनिमम थ्रेशोल्ड था 75 73 तक के उन्होंने 3 लोगों को एग्जाम लिखने से बाहर कर दिए लेकिन मैं एग्जाम लिख रहा हूँ 73% तक 2% नहीं दिया लेकिन मेरे को 60% का जंप देके उन्होंने मेरे को एग्जाम लिखवा दिया मैंने जानबूझ के एग्जाम फेल कर दिया और वो सब फिर उसके बाद
अगले साल अगले सेमेस्टर 2 I dropped out because I was like yeah this is not happening bro. और फिर मैं इस तरफ आ गया. देखिए ना, दिस वो पढ़ाई की बात साइड में करके आई अगेन your parents eventually were okay with understanding that you are studying well, लेकिन गेमिंग हाँ. ऑफ कोर्स हो रहा है. So tell me about, अगर पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो ही गए थे, tell me about any this emotional moment of your life जहाँ पे you felt like you were at your lowest कि यार what, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ये मेरे को करना चाहिए, जो किसी भी एस्पेक्ट में. Where was the emotionally taxing part of your life? Emotionally taxing part was like after like kind of Revenant disbanded the first time in the last season. Yeah. So I was teamless for maybe like 2 days. Medal esports में गए ना वो, and I had very high expectations from that Indian lineup. Like it was a very good lineup, सब अच्छा था, सब कुछ everything. फिर बाद में साई के साथ भी मतलब pretty good चल रहा था. Scrims were good, but then we lost matches. We are like confused what the fuck is happening. And then we benched Sai. We like brought in one tap god. And again scrims बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे थे. Again official हारने लग गए. Yeah. And like medal, the team was good. The chemistry was good. The bonding was good. Everything was good. And in fact, the scrims were good. I don't know what was the barrier which was holding us to like win the official matches. Yeah. And वो official matches हम लोग ऐसे ऐसे लोगों से हार रहे थे जिनका मतलब obviously नाम सुना है community में and everything. Like I'm pretty much active in the community. Yeah. But में हम लोग ऐसे ऐसे लोगों से हार रहे थे which we didn't even expect going close. And हम लोग ऐसे ऐसे लोगों से close जा रहे हैं कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा अजीब था वो फेज़. Yeah. And I was like, bro, ये हो क्या रहा है? ये टीम वर्क नहीं कर रही, ये ना वो. Is it an individual basis error, team error, ये ना वो? मेरे को याद है that middle phase of yours जहाँ पे you guys were playing hyper speed gameplay, like your executes were extremely fast paced. हाँ. You were running in as the main spearhead, जो हो ना हो space create करना. I remember you telling me this. तो वही when I was like when middle का साई वाला lineup was active, I was the spearhead. Then one tap came in, one tap became the spearhead. हम लोग ने slow वाला try किया, fast वाला try किया, hyper speed भी try कर लिया, मतलब EDG PRX level तक के speed का try कर लिया. And we are like, bro, nothing is working. How? Like where are we lacking? But after I left middle, after middle disbanded, then I came to know that bro, that what was like barring us from victory, it was the mentality of the players. Like not mentality of the players technically, it was the mental fortitude of the players. कि एक बार वो डाउनहिल टच हो जाता है ना, तो एक मैनुअल गाड़ी को न्यूट्रल पे छोड़ दिया, जा रही है, वैसा हो गया था. There was no one to stop it. And Yeah. लाइक इट वाज नॉट इवन जस्ट अ टीम एफर्ट. वो एक प्लेयर का ही सामने से गिरते जा रहा था कि वो जा रहा है एंड देयर वाज नो स्टॉप टू इट. तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ड्रॉप होने का, ये ना वो, एवरीवन वाज एट देयर सो लोवेस्ट कि सब ये सोच रहे थे कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं कि हम लोग सबसे हार रहे हैं. तो वो हर एक प्लेयर के दिमाग में खड्डा हो गया कि वेयर इज इट गोइंग रॉन्ग. एंड वो सब लाइक आई एम नॉट किडिंग, मेडल esports का जो रन था involved for all the players, all, like I'm talking about all 6. Yeah. I bet except Sai, I would say, क्योंकि साई के लाइफ में तो बहुत सारे ट्रेजेडीज भी हुए career related. तो except for Sai, for other 5 people, I think so it might be the lowest point of the career कि क्या कर रहे हैं, खेलना चाहिए क्या और हम लोग को, वैसा टाइप वाला. Damn. I mean, you mentioned Revenant's disband, was quite last season. Of course, Revenant का Valorant पे आते हुए that first split no slot वाला जो tragedy हुआ था, उस वक्त did you think you would be playing in split 2 या फिर थोड़ा इधर उधर था? When of course थोड़ा you इधर guys उधर था. got right to ace as well, तो क्या हुआ क्या था उसमें? थोड़ा इधर उधर हुआ था. बेसिकली इट वाज समथिंग रिगार्डिंग लीगल इश्यूज एंड एवरीथिंग. थोड़ा इधर उधर था स्प्लिट 2 का, बट आई हैड फेथ कि वी आर गोइंग टू प्ले स्प्लिट 2. And why I was kind of upset on the disbanding of the team was because like even when we were about to play split 2, we were considered to be the favorites because Yeah. we were playing good. हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की थी and we had the team with the best energy because we had the most longest lasting roster except for the inclusion of Ace. Yeah. All 4 were together. So like I had very high expectations, but due to a lot of internal issues and everything,
ड्यूरिंग स्प्लिट 2, वो टीम मतलब मेरे आंखों के सामने ऐसा फॉल्टर होते हुए दिख रही थी, पूरी क्रम्बल होते हुए दिख रही थी। Mm. एंड द वर्स्ट पार्ट इज देयर वाज नो सेविंग इट। Yeah. आई कुड सी दैट टीम फॉल अपार्ट। Mm. आई वाज लाइक व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस। Hmm. वैसा वाला हो गया था, काइंड ऑफ अनलकी रियली था वो बस। So from then till now, how did RNT Paradox come back? What was that approach? Like, I'm pretty sure Rohit would have spoken to you, the owner. Lekin, what was the thing that keeps attracting you to Revenant and Revenant to you? Because this is like you've been there with them, I believe, after TR. I think this is the longest you've been with an org. Yeah, Yeah. TR 1 year, Revenant 1 year. Medal was the shortest, if I'm not wrong, by a month or 5 months or something. Medal was So, the shortest run. So what? Revenant, How did you feel when Revenant came back to you this time again? so like I was Especially with their lineup that they so like I was pretty much hyped because this lineup is like, honestly speaking, kind of a cheat code in Indian Valorant. Mm. Like, but we cannot even say cheat code right now because the level of competition has rose significantly high, like Yeah. especially from the last year. Like, बोलने वाले तो बोलेंगे कि भाई अभी और गंदा खेल रहे हैं, बट हमें पता है कि हम लोग खेलते हैं सर्वर पे, कौन कौन Mm. मारता है, कौन कौन सर फोड़ता है, दिखता है हम लोग को. So Mm. basically the competition has rose pretty much higher Yeah. than before. And also, like, मुझे जब पता चला कि रेवेनेंट is coming back, you know, आज तो मुझे रोहित भाई ने सामने से बोला था, we are coming back, are you in? I was like, yeah, I'm in. And वो भी timing was so sweet. Like, जो जो बोलते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, kind of वही हो गया. Medal disbanded and I was like, so what to do now, what to do now? Mm. Again, I was orgless for 3 days. And then रोहित भाई का कॉल आता है कि पारा भाई मेडल का क्या सीन. मेडल का अब तक मतलब आया नहीं था Yeah. पोस्ट वगैरह. तो मैं बोला कि डिसबैंड हो गया. तो रोहित भाई बोले हाँ पता है मेरे को, अभी किधर. तो बोला कि नहीं कहीं नहीं हूँ, आरएनटी आ जाओ बस. मैं बोला लाइनअप क्या बन रहा है ना वो. आई वाज लाइक ओके. Did you know that time कि you were going to be playing with Severin, SK Rossi? No, so Severin, like SK Rossi was confirmed, Mm. and our third Indian was not confirmed till a very long time. Mm. And the two imports were confirmed on 28th January, if I'm not wrong, 28th or 27th January, Mm. like literally on the last date of roster lock. Yeah. So इसलिए हमारी टीम की प्रैक्टिस थी ही नहीं. They came to India on first February and our first match was 3rd 3rd February. Like, February, yeah. practice करे तो कैसे करे. And practice was not possible with DOS earlier because like he was from Kazakhstan and the lowest ping he gets from Kazakh to any Apex server is Hong Kong, which he gets 120. Okay. That is, I mean, considering that you guys went clean slate, I wouldn't say वो पूरा clean था. Of course, you guys did have a couple of hiccups. लेकिन I think, like you said, like, you know, your roster right now is looked at the all-star lineup, right? तो अगर present की बात करें, you know, as we come to the end of this podcast, I want you to give me, like, you know, an entire, like, you know, ऐसे मोमेंट जो पूरी, सो नॉट मोमेंट, आई वुड से कि पूरा करियर जो है अभी तक का, डू यू थिंक राइट नाउ इज दिस योर बिगेस्ट मोमेंट, लाइक वो, और हैज देयर बीन एनी अदर बिग मोमेंट इन योर करियर दैट यू रियली चेरिश? बिगेस्ट मोमेंट तो अभी तक आया नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर लाइक इंशाल्लाह आएगा ये साल. असेंशन जाएंगे, असेंशन जीतेंगे. दैट माइट बी द बिगेस्ट विन which I am pretty much hoping, because like although we are still not on that level, we are still practicing, we are doing a lot of stuff around, but I think so this might be the year for us. I like that. So before I end this off, I've got two segments for you, okay? There's gonna be one, I'm gonna do a rapid fire question with you, okay? Yeah. And then I'm gonna do one small hot takes question with you, session Okay. with you, okay? Uh, Okay, all right. So let's quickly start with rapid fire, okay? Basic questions. Then I want you to answer. Okay. Breakfast or dinner? breakfast. Early morning or late night? Early morning. Netflix or Amazon Prime? Netflix. Suiting up or casual wear? Suiting up. All right. Spicy food or sweet food? Spicy. Uh, Streaming or video creation? Streaming. Esports or casual gaming? Casual. Right. Vandal or AK? AK. AK. All right. M4A1S or Phantom? Phantom.
And Deagle or Sheriff? Deagle. Jet or Raze? Race. Deadlock or Killjoy? Deadlock. Deadlock. Ah, yeah. So because of course you started playing that. Okay. Judge or Spectre? Judge. SK Rossi or Caramel? Rossi. All right. Demon One or Durka? That one is pretty tricky, but I'll go with Demon one because he's naturally a flex player. All right. Tens or Tens of Forsaken? Forsaken. Forsaken. Okay. Monye or Jing? Jing. All right. And the last one, Operator or AWP? Op. Up. Okay. Yeah, AWP. AWP. Nice. All right. So the CS blood is still running smooth within you, Yeah, except bro. Like operator, I feel is very shaky, bro, at sometimes. But op, bro, Op is it's solid. Yeah. crazy. Yes. Yeah. All right. Okay. Coming to the hot take section. Okay. I want you to give me a couple of things that, let's say, if you yourself, before I ask my questions, tell me any hot takes that you think that might be slightly unpopular among the community. Like, what you believe in that people are like, अरे यार ये क्या बोल दिया? ये क्या बोल दिया? अरे वो तो बहुत है। मेरे को तो कैंसल कल्चर पसंद नहीं। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, स्ट्रीम पे भी बोल देता हूँ, कहीं भी बोल देता हूँ। मेरे को इंटरव्यू पे माइक दे दो, मैं बोल दूंगा। कुछ आई इधर आई भी विल बोलो. ऑलवेज प्ले ऑन द बॉर्डर लाइन, Go on, एक go ऐसा on. एक लाइन रहता है, मैं लाइन पे चलता रहता हूँ। एंड आई नो वेयर नॉट टू फॉल। Go on, give me a hot take of yours about Valorant or about अबाउट something, वैलोरेंट, or about the community Valorant, basically around Valorant. Yeah. basically around Valo community is like a very mixed, bro. Like अजीब सा community है Valorant, like compared to any other community. Why I would say this, like personally, BGMI community is like a diehard fan, but you act like BGMI fans, but you are not that passionate about your team. And at the same time, whenever you are praising someone, you are the only ones who are playing for his downfall. And जब उसका downfall आता था, तुम सबसे ही पहले उसके पीछे पड़ जाते हो। भाई मतलब चाहते क्या हो तुम लोग लाइफ में? Actually, you guys act like the BGMI fans, but you are not as passionate as them. Damn. Either Okay. deep as passionate as them. भाई मतलब बनाओ कल्ट फॉलोइंग करो कोई टीम की, आओ रेवेनेंट फैन सीधा ऐसा छाती में पेंट करके लाओ लैंड पे ऐसे ऐसा। tattoo इधर सीधा tattoo कर दो. Revenant, be Revenant. हाँ ना। What? Okay. Give me a one hot take about the game itself. Game itself, Yeah. bro. This game is a hot garbage. It sells like pancake because the thing is, it is very appealing to the casual community. It's very appealing. Like the skill ceiling is not that high. Like you cannot differentiate the greatest player of all time to and to a consistent above good player. Like not a great player. Even what do you say? Even an 8 on 10 player can be as good as 10 on 10 player. And even a 7 on 10 player on a good day is as good as 10 on 10 player. The skill ceiling is not that high. But whereas in different games, like for example, if I'm spectating Rainbow Six Siege, I'm spectating CS2, Yeah. the movement of the player can tell you, like literally just 2 minutes of a player spectating POV can tell you how good of a player is he. Like even if he does a mistake, you can still point out, like, bro, he's so crisp. Crispy movements in Valorant, where are they? We can only do with Raze or Neon. I can't think of any other movement agent. Like Jet is not a movement agent for me. Yeah. Interesting. Okay. So let me throw a bit of the I'll put a little bit of the game set and also a little bit of player side. If you one thing that you would change drastically in Valorant, you think that needs to right now change, what do you think that is? Right now change. So Like it needs to be like a big change. Like what do you think is the big change needed? big change needed is like the TTK of this game. The TTK should be reduced. All guns combined. TTK should be reduced in this game. It should be more fast paced. Because you are using abilities so many times, like it's leaning more towards the team play. The meta is already shifted towards team play a lot. Yeah. And with the inclusion of such agents, like there should be a little bit more chaos, that I feel. Like if there's no chaos, like if there's easy to counter, if it's so easy to counter, if it's so easy to execute, then that's not a balanced game. If you get my point. Yeah. Either it should not be easy to counter,
or either it should not be easy to execute. Got it. Yeah. Like I have seen so many teams, bro. अभी कौन सा इवेंट चल रहा था, किक ऑफ चल रहा था ना सबका, Yeah. कितने सारे टीम्स, bro. I never watched VCT, okay, but for some reason I was watching VCT this time, and I was like so confused. Why are so many teams playing retake? The game should not be like this. Retake protocol तब होना चाहिए, like you're fighting and there's some advantage or disadvantage, then you go into the retake. The teams are playing 5v5 retake, 5v4 retake. That should not be possible, bro. Then there's some fault in the game. The meta is going in a wrong way. Like obviously it's a FPS, tactical shooter, I know, but it shouldn't be this consistent, you know. There should be some chaos. Like first person shooter, eh? Yeah. Not everything should be on abilities. Yeah. And not everything should be an assisted kill. You need to show your gunplay, make it more fast paced, reduce the TTK. Interesting. I'm not even saying about change the abilities, just reduce the TTK for all guns. Then you'll see. This is a take that I've never seen before from anybody, you know, wanting the game to be more chaotic and fast paced. Okay, I like it. Let's move on to a little bit of a different side of this as well. Okay, who's the biggest diva amongst all players that you've played or seen in the Indian community? Who's the biggest diva? Biggest diva. Yeah. Okay. I've played against with all, right? Pretty much, yeah. कौन था यार सबसे ज्यादा नखरेबाज एकदम फुल? कौन था? I would go with Knight Rider. Knight Rider. हाँ. Okay, interesting. Why? Because he had a limited agent pool and he always used to like argue with the coach कि नहीं भाई मैं तो यही खेलूंगा. कुछ HB के और उसके बीच में हमेशा होता था कि भाई नाइट क्या कर रहा है यार, खेलना, एजेंट सीख, किल जॉय तो सीख ले एटलीस्ट, ये तो सीख ले एटलीस्ट. बोलता है नहीं मैं तो जेट खेलूंगा. मेरे को जेट आता है, मैं जेट खेलूंगा. एंड द सेकंड एजेंट was Sage. That's it. That was his agent pool completely. But उसको कोच ने इतना डंडे मार मार के किलजॉय सिखाया. और जब किलजॉय खेलने लग गया और there was a point where he had to play Jet and he's like भाई मैं जेट नहीं खेल सकता, अभी मैं सिर्फ किलजॉय खेलूंगा. कोच भड़क गया, भाई क्या हो गया तेरे को, जेट्स पे हिलता नहीं था. फिर वो बोलता है कि नहीं यार अभी मेरा आदत हट गया है, मेरी माइंडसेट अभी जेट वाली नहीं है. I will play smart Jet. And by smart Jet he meant like आगे डैश नहीं मारेगा वो. वाह ठीक है. Nice. Knight Rider. I actually did not expect that answer, but okay. It was fun. It was very fun. Who is the biggest whiffer you've seen till date in the professional community? Biggest whiffer? In like complete अपना उसका Valorant में जो भी देखा है किसको भी biggest whiffer? whiffer. यार है वो अभी भी खेलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, बता तो दो. अरे मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा ब्रो? कौन सी टीम के लिए? वो भी याद नहीं आ रहा है. वाह. मतलब बेसिकली he started playing the game in late 2022 और अभी खेल रहा है वो. अभी है VCS में ब्रो. करामिल? नहीं करामिल नहीं है. करामिल तो बहुत लेट आया था, 23 में आया था. लेट 22 और अभी VCS में खेल रहा है. VLR खोल के देखता हूँ ब्रो डायरेक्ट. किसकी बात कर रहे हो? मेडल में कोई था? डेडली? नहीं डेडली भी नहीं. विबोर. मैं विबोर 22 क्यों बोल रहा हूँ फिर? विबोर पागल हो गया. मैं तो बीटा से खेलता रहा. विबोर. हाँ, क्योंकि विबोर has the most insanest of the clips and at the time you will find equal amount of whiffing clips. वो कभी देखा नहीं है, but hopefully we get to see विबोर. Okay, that's very interesting. Okay, ऐसा कौन है जो अगर लैंड वैन पे गए और या फिर मीडिया डेज दैट यू गाइस हैव, सबसे ज्यादा टाइम मेकअप ये सब लगाने में कौन लेता है? हु टेक्स द मोस्ट टाइम टू गेट रेडी इन योर एंटायर करियर दैट यू सीन सो फार? मैं तो अभी तक किसी को देखा नहीं है भाई. मतलब हमारे जितने भी टीममेट्स हैं ना, वो लोग तो बोलते थे अरे क्या मेकअप लगा रहे हो, हम लोग को कैमरा पे जाना है. There was none bro, literally like there was none. Even like चिंग एंड जॉशेस, उनका भी मीडिया डे होता था तो वो लोग क्या है बस कुछ भी लगा दो 1 मिनट में रेडी. सब 1 मिनट में रेडी होते थे रे. कोई ऐसा था नहीं. विम्प है सबसे ज्यादा टाइम विम्प लेता था. Right. अगर you would tell one person right now इसी वक्त जो VCS में खेल रहा है कि भाई तू ये छोड़ के कोई और काम कर ले, तेरे से ना हो पाएगा, कौन है वो? Like pick up another profession, forget gaming.
एक मिनट वापस देखना रियल पड़ेगा। यस भाई मैं चेक भूल गया हूँ, मेरे को याद ही नहीं ये कौन से ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स देख के बोल रहे हैं कि क्या है कि नहीं 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 नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को याद ही नहीं कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। वाह गाइस दिस इज पैराडॉक्स मेंटालिटी ऐसी है जो भी समझे मारने कोई एक प्ले कौन है? अच्छा बेसिकली बोल रहे हो गेम छोड़ दो भाई कोई और काम कर लूं ओके, तो आई थिंक सो मैं दूंगा। इतने कम प्लेयर दिए सर। 8 टीम है भाई 8 टीम्स गेम छोड़ दे कुछ और कर रहे हैं। कोई और प्रोफेशन आई थिंक इट्स टाइम यू नो पिक अप अ न्यू प्रोफेशन ओ, तो सबसे ओल्डेस्ट को ही बोलना पड़ेगा। ओल्डेस्ट को नहीं ऐसा नहीं है यू को टेल एनीबॉडी जिससे गेम बेसिकली ऐसे कि ना हो पाएगा तुमसे ओके, ना हो पाएगा टाइप का। हम्म और बहुत सारे इधर तो फिर। नाम ले ले कोई बात नहीं चल इनमें से एक ले लेता हूँ हाँ मैं। एक एक नाम आ, बस शालू भाई आप ही बैठ जाओ, बराबर डाला था कोच का पोस्ट, वापस आ गए एमएलटी में। अरे यार बेचारे को फिर से तोड़ रहे हो fair okay fair enough okay tell me okay this is little different tell me 3 things about yourself that nobody actually knows but they should probably know नोबडी नोस। भाई देखो, मैं एक बार नोबडी नोस बट दे शुड प्रोबेबली नो। भाई आई एम अ वेरी जेन्युइन स्वीट हार्ट पर्सन एट हार्ट। मैं कैमरा पे बहुत ऐसा एकदम करता रहता हूँ, टाइम पास भरम भराई करते रहता हूँ, बट यस आई एम अ वेरी काइंड पर्सन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर वाज वन हाउस पार्टी वेयर लाइक फ्रेंड्स और बहुत सारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आए थे, एंड देन रैंडमली मैं जानता भी नहीं था वो लड़की को, वो बोलती है कि bro you seem like a cool person, chill person, but at first you looked so unapproachable। like unapproachable मतलब मेरे को लगा तू बहुत ज्यादा arrogant या rude रहेगा। मैं बोला अरे भाई मेरी शक्ल पे दिखता है arrogant rude हूँ मैं। तो तब से मैं ऐसा बोलता आता हूँ। और खाली उसने ही नहीं, वो उसका मेरे को स्ट्राइक हुआ। बहुत लोग ने बोला भाई मेरे को लगता था ब्रो तू एकदम arrogant रहेगा, बट तू मस्त बनता है। I was like okay bro। फिर एक ये है दूसरा, ब्रो आई लव कार्स, लिटरली लव कार्स। भाई एक गाड़ी दे दो, स्पेशली आरडब्ल्यूडी रही तो दे दो, आपके पीछे के टायर जला के दूंगा मैं। इफ यू गाइस नो देन यू नो। वाह ठीक है ये तो कुछ अलग ही है एंड थर्ड थिंग एंड द थर्ड थिंग इज I was very antisocial at one point. Like I didn't even used to speak to my friends. वैसा था कि सामने से मेरे दोस्तों ने सामने से बात किया तो ही मैं बात करूंगा, वैसा टाइम वाला बंदा था। But right now I'm not too of an extrovert, but an ambivert you could say maybe. I'm not sure, but अभी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। अच्छा है अभी थोड़ा शायद कम बोलना चाहिए लेकिन ठीक है कोई बात नहीं पैरा बंदा तो अच्छा है ओके लास्ट 2 क्वेश्चंस देन वी रैप दिस अप इज देयर a certain achievement that you really want in your life right now could be gaming could be any other field what is the one achievement that you feel like is pretty far right now for you but you really want it at some point वो तो मेरे हर एक फील्ड में अप्लाई होता है, चाहे वो गेमिंग हो नहीं हो, बट टू सी इंडिया एट द पोडियम लेवल of anything। all right okay uh last question before and this is not to do with the hot take but I mean sort of yeah is playing with SK Rossi actually worth the hype that he brings Yep, he brings in the experience of international leagues and everything, and yes, it is actually worth the hype। okay can you before like can you give me a little bit of your experience of playing because you're playing with him for the first time right Yeah, especially after he's become what he has become तो वो experience कैसा रहा SK Rossi के साथ खेलकर so it was a really good experience। like मतलब he's also a good, very good person and everything, must एकदम humble, calm, chill, very fun, outgoing and everything। But in terms of game, it kind of like has relieved me from the role of being a star player, because in TR I was the main, in first Revenant I was kind of the main, then in medal again I was the main, but right now I can take a step back in the role, and right now I can be that shadow yeah of his light। yeah I can do so many things under his shadow that might go underappreciated, but
if a person who has a keen eye for Valorant Yeah, might know what I am doing inside the server. agreed. So that's the best part, and that's the role which I kind of like it, because these kind of roles go underappreciated, but they are the most crucial key for your team success. Agreed, agreed. Last thing, Casas, before you take your leave, anything to say to your fans and anything to say to your haters? Give me one line for each. फॉर माई फैंस एंड एवरीवन, भाई अपना करियर मत खराब करो। ई स्पोर्ट्स अगर तुम लोग कर रहे हो तो मेरे घर वालों की एडवाइस ले लो। पढ़ाई करते करते जो करना है करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक इट माइट फील कि भाई बहुत हार्ड टू बैलेंस है, बट इफ यू थिंक विद अ काम माइंड एंड मतलब एक दिन बैठो, आराम से बैठो and then see everything, you can easily plan it out. You can literally easily plan it out. You have 24 hours in a day. Even if you sleep 6 hours a day, that's more than enough. And although like, चलो जो लोग रहेंगे एकदम स्लीपिंग ब्यूटीज वगैरह 8-9 घंटा सोने वाले लोग, सो जाओ ब्रो, आराम से उठो, बट like always keep taking care of your health, because health is the first priority. Yeah. मेरे लाइफ का सिंपल फंडा है, फर्स्ट पे आती है हेल्थ, सेकंड पे आता है जो भी करियर है, मतलब सेकंड पे आता है फैमिली, थर्ड पे आता है करियर, फिर फोर्थ पे आते हैं फ्रेंड्स वगैरह जो भी है सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इट फॉलोज सूट. What about your haters? What would you like to say to all the people who doubt you? गाली देते हैं, paradox, can't do it, वो सब. आई डोंट थिंक सो मेरे कोई हेटर्स है, और अगर कोई हेटर रहता भी है तो बस फैन में कन्वर्ट हो जाता है, फैन या फ्रेंड में ही कन्वर्ट हो जाता है वो कुछ टाइम बाद. आई डोंट थिंक सो मेरे कोई हेटर्स है भी. I am one among them, guys. No, but yeah, okay. Paradox, thank you so much for joining here. It has been a really, really fun and entertaining time. You always have been a very, like you said, cool person. I'm very chill, bro. एक बार हमारे ऑडियंस के लिए can you please do your favorite hand Hand gesture? sign. Yeah, hand sign. Yeah. That is the paradox sign, guys. अगर paradox के fan हो तो आके land पे ये करना. ऐसा लैंड पे कर दो गाइस, खत्म खत्म. Khatam. All right, Paradox. Thank you so much. I hope that you have a bright future, and we wish you all the best for the LAN. Hashtag be revenant for you. देखते हैं कि कौन क्या कर पाते हो तुम on the Yes. LAN. All right. So thank you. Thank you.